Hello artist, welcome to Art with FunXcies. So today I'm back with yet another very cute and cartoonic drawing. So for that I'm using Procreate on my iPad, and I've taken a canvas using this screen size. Now I'm inserting this photo, and guys, I'm showing you how you can easily trace your photos and draw very easily. सो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक लेयर को एकदम उसकी ओपेसिटी एकदम लो कर ली है। अब दूसरी लेयर पे मैं यहाँ पे मोनोलाइन ब्रश सेलेक्ट करूँगी एंड ब्राउन कलर, और इस तरह से मैं उसको ट्रेस आउट कर लूँगी। So guys, this video is especially for those people who are really afraid to draw with free hand. So that's what I'm showing you guys over here, how you can just trace out a beautiful cute drawing and make it on your own. So guys, once you are done with the tracing, you can just simply delete that layer, and now we'll start working on our project, which is the sketch part. And for that I've taken a layer below the sketch layer, and अब मैं इसको अच्छे से color कर लूँगी। So now as you can see, I've painted the body part of this beautiful cute teddy. अब मैं इस layer को alpha lock कर लूँगी, and I'll start highlighting this layer using a little darker tone, and I'll use airbrush में soft brush वाला brush, and then I'll just start highlighting it. Now guys, इस तरह से हाईलाइट करने के बाद I'll also use my merge tool, and I'll just simply smooth out the edges. So I was not happy with the result, so इसलिए मैं थोड़ा सा और darker shade से उसको हाईलाइट करूँगी. Once that is done, I'm making a glossy and cute teddy bear, so इसलिए मैं white lines भी add करूँगी on top of that. अब my teddy bear is ready. अब इसके नीचे एक और layer लूँगी, and I'll just choose this very pink kind of color over here, and I'll start applying this color onto the ears of my teddy bear. Once that is done, इसी कलर से मैं उसके ब्रश को भी ऐड कर लूँगी, and once that is done, अब मैं थोड़ी सी हाईलाइट और ऐड कर लूँगी onto my teddy bear. Once that is done, अब चलो चेरी को कलर करते हैं. So for that I'm using the red color. फिल करने के बाद इसको भी हाईलाइट कर लूँगी, एंड आई एम जस्ट गिविंग सम डिजायर्ड शेड. एंड शेडिंग करने के बाद मैं मर्ज टूल से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. अब ये ब्लेंड हो चुकी है. इसको भी मैं शाइनी बनाने के लिए यहाँ पे वाइट कलर की लाइंस ऐड कर लूँगी, एंड आई विल जस्ट स्टार्ट पेंटिंग द स्टेम एंड द लीफ ऑफ द चेरी. Once that is done, हाथ को भी कलर करने के बाद अब क्रीम को कलर करने वाली हूँ. So for that I'm using this very light yellow color. अब इस तरह से उसको हाईलाइट कर लूँगी so that उसकी shadow easily visible हो. अब इस शैडो को बनाने के बाद मैं नीचे की क्रीम को बनाऊंगी, which is the cupcake cream, and for that I'm using the brown color, और different brown tone से मैं उसको अच्छे से blend कर लूँगी. Now cupcake की बेस पार्ट को भी कलर करूँगी using some orange color. कलर करने के बाद इसको भी अच्छे से शेडिंग कर लूँगी. Once this is done, अपने कपकेक को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी.
And I've used the Monoline brush again to make some more shine, and I'm just adding some white lines over here so that it looks more shiny. अब थोड़ी सी और शैडो ऐड करने के बाद गॉसियन ब्लर यूज़ करके इस तरह से शैडो को भी मैं ओपेसिटी लेस कर लूँगी। अब लेयर्स को इस तरह से मर्ज करने के बाद उसके नीचे भी एक लेयर ले लूँगी एंड आई जस्ट चूज़ अ वेरी क्यूट एंड ब्यूटीफुल पिंक कलर। अब मैं फ्लावर्स को भी कलर कर लूँगी एंड फ्लावर्स को भी कलर करके अच्छे से उनको भी हाईलाइट कर लूँगी एंड शेड कर लूँगी। अब गाइस, बिकॉज आई एम मेकिंग बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल, सो उसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा इजीली इसको कलर करना सिखाया है। नॉट मच शेडिंग एंड नॉट मच फ्री हैंड ड्राइंग इज वेल, सो इसलिए मैंने ट्रेस करना सिखाया हाउ यू कैन इजीली ट्रेस योर ड्राइंग एंड क्रिएट ब्यूटीफुल आर्ट वर्क्स। अब मैं यहाँ पे इसी तरह से उसकी बेस को भी रेडी कर लूँगी। Once that is done, मैंने इसके नीचे एक और लेयर यूज़ की है, इसको लाइट पिंक कलर से फिल कर लूँगी। अब थोड़ी सी बैकग्राउंड में हार्ट्स बनाऊँगी और उसमें भी वाइट शाइन ऐड कर लूँगी। एंड बैकग्राउंड को गॉसियन ब्लर करने के बाद अब मैं स्टिकर के लिए इसको साइड से वाइट कलर कर लूँगी। अब वाइट आउटलाइन देने के बाद इट इज़ लुकिंग समथिंग लाइक दिस, as you all can see. And ta-da! My drawing is absolutely ready. I hope you liked it. Bye!